हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन नटसेल बाय महेश सेन। नाउ नो मैथ्स फियर। सो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू learn about the Euclid's division lemma, right? So what is Euclid division lemma? It's a statement, all the things we are going to learn today in this video. So just keep with me, stay with me, and I will explain you everything regarding the Euclid division lemma, its a statement, and what and how we generally use this Euclid division lemma. Fine. So very first, we'll go for the mathematical statement of the Euclid division lemma. It is the topic in the 10th class, chapter number 1, right? So Euclid division lemma is that the two positive integers a and b is such that their integers, unique integers q and r, which generally satisfy the given condition, that is a equal to b q plus r, where r is the remainder, so we can write here r is always less than b and greater than or equal to 0. So guys, this is the basically mathematical statement of Euclid division lemma, and we'll learn here why we are using this mathematical statement to find out the HCF of two numbers. I'll explain you one by one. So for this only we'll take one example. We'll take two numbers and we'll find out the HCF of both the numbers. Okay, what is the highest common factor? Highest common. Although I will tell you, you can find out the highest common factor, or you can say HCF by factorization method, prime factorization method. Okay guys, but in the board exams, 10th class board 2 or 3 marks mein one question comes on the direct use the Euclid division lemma, then we have to use the Euclid division lemma only. So framing of the question will be like this guys. Find the HCF of the numbers, and we can take two numbers like 455 and 42. So guys, 455 and 42 का LCM HCF निकालना है, तो it is very simple. We'll follow the certain certain steps, algorithm, and then we'll solve it. So very first you will draw the rough column. After drawing the rough column, you have to write all the numbers here. The first one is 455. So 455 is the bigger number, and 42. So 455 will be divided by 42 one time. We'll perform the division method here. Okay. So remainder is 35. Now guys, listen to me. We are aware with the division method. Okay, हमने डिवाइड किया है कई बार. कैसे करते हैं डिवाइड आपको अच्छे से पता है. सपोज आई एम गिविंग यू 25, तो 25 को 4 से डिवाइड करना है. ठीक है, सो 25 4 से डिवाइड होगा तो 4 6 24, वन रिमाइंडर बच जाएगा. ठीक है, तो सिमिलरली यही वाली चीज़ हमें एल्गोरिथम मतलब पॉलिनोमियल्स में भी, नंबर्स में भी हमें ये चीज़ें डिवीज़न कर चुके हैं हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पर 42 यदि 455 को डिवाइड करेगा 1 बार जाएगा, एंड यू विल गेट सम रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर इज ऑलवेज देयर इन दी हियर यू कैन सी 35 इज द रिमाइंडर एंड 1 इज द क्वेश्चन. ओके, अब ये दिस ऑल वर्क वी हैव डन इन दी रफ कॉलम. अब क्या करना है गाइज, आपको ये फेयर में लिखना है ना. द एक्चुअल सॉल्यूशन यू विल राइट इन द फेयर. सो यू विल राइट द यूक्लिड डिवीजन लेमा फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. अब आफ्टर दिस you are written here a equals to bq plus r, then our a will be 455, that is equals to 42 into 1 plus remainder, and remainder 35 है. So we are writing here 455 equals to 42 into 1 plus 35. A remainder is not equal to 0. So guys, I will tell you one thing more कि जब तक remainder 0 नहीं आएगा, you have to write every day. Okay, every time you have to write this process. Every time you will practice the same thing in the first step. Now 42 will divide it by 35. So we are writing here 35 1 35, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर 7 बचा. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में भी यू आर वेरी क्लियर विद दिस. सेकेंड स्टेप में भी आप लिखेंगे 42 इक्वल्स टू 35 इंटू 1 प्लस 7, बिकॉज 7 इज द रिमाइंडर. जब तक रिमाइंडर नहीं आएगा यू हैव टू परफॉर्म दिस मेथड, राइट. और ये जो है हमारे पास इसको हमने एक बॉक्स में रख दिया.
अब हम क्या करेंगे, द नेक्स्ट स्टेप ऑल्सो विल रिपीट बिकॉज आर इज नॉट इक्वल टू 0. सो विल डू वन थिंग, दिस 7 विल डिवाइड दिस टाइम 235. ओके, तो 35 को कैसे 7 डिवाइड करेगा, आपको पता है कितनी बार जाएगा, तो 7 विल डिवाइड 35 5 टाइम्स, 7 5 जा 35 एंड यू पीपल विल गेट रिमाइंडर हियर 0. सो देखो लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 आ गया. यस, तो रिमाइंडर 0 इज देयर, सो वी कैन से नाउ योर HCF हैज कम टू अस. ओके, सो व्हाट विल बी द HCF. तो याद रखना जो रिमाइंडर 0 आया, जब जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया उसका डिवाइजर क्या है. यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइजर 7 है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे 35 इक्वल्स टू 75 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 0 इज द रिमाइंडर इज 0. सो HCF ऑफ बोथ द नंबर्स विल बी 7 एंड नंबर्स आर 4, 55 एंड 42. I hope so you understood this method. It was very simple. And one more thing I just want to tell you, this is the first sum only we have done. We'll continue taking 4 new examples and we'll have this kind of example. Till then, bye bye, thank you so much. And one more thing, don't forget to subscribe this channel and like it. Thank you so much guys. Stay safe, stay healthy. Hey, Jai Hind.